number of years. So how does the increasing frequency and intensity of flood events in Pakistan driven by climate change impact the national security through mass displacement and different strains that are coming on the urban centers as well? And also, if you would like to also brief this to your audience, like what the context we're actually having today, how it is actually impacting Pakistan. Just initially for content. Over to you. Sound good, Ji. Thank you so much, Ji, for that. First of all, I think बड़ा important topic लिया है for discussion, जी. जरूरत है और उसके अंदर भी शायद उसको bifurcate करने की जरूरत है. We got to look into the matter. What does national security mean? Which terms are we talking about? Historically, it's been seen from one angle only, but now there are survival issues. It's beyond adaptability, so to say. When we say national security, तो उसमें food की बात आ रही है, energy की बात आ रही है, survival की बात आ रही है, economic growth की बात आ रही है, and then obviously securing the borders as well from the outside. ये दो तीन चीजें जब हम देख रहे हैं, historically when we look at things, excuse me, so it is evident, we all know that we are among the top 10 most vulnerable countries to climate change. GDP growth has tremendously gone down. The fiscal space has not really grown. The spread is increasing as compared to in terms of the supply and demand in itself in the economy. And then on top of that, habits like floods and other disasters which we face, the hazards which we face, are bringing another cost to us. If you look at the cost the economy requires to meet the SDG goals, to meet the sustainable development agenda items, to make a resilient development in the country, the cost is huge. And when we face events like flood 2022, that means we're gone for 10 years because the estimated costs stand around $40 billion. So that's the space which is ever increasing while the economy is not growing in that matter. So this is all directly linked to the national security of the country in all the aspects which I mentioned earlier. You start from the ports, you start from the waters, you start from the coastline, and you go all the way up to the snow-covered glaciers, so to say. The entire country becomes at a stage where it is at risk when it comes to national security. Infrastructure is what we are supposed to be talking here today in this particular session. So already हमारा infrastructure को इस तरह का develop नहीं हो रहा कि जो उसके sustain कर पाए. और एक छोटी सी मिसाल coming from NDRMF, where we also work among other thematic areas. I'll just take one example. Retrofitting of buildings against seismic. We look at Japan, जी, सबसे ज्यादा आते हैं, लेकिन casualty rate सबसे कम होगी. और हमारी development इससे ज्यादा क्या evident होगी कि जरा सा भी कुछ होता है तो एक लंबी डिस्प्लेसमेंट हो जाती है, कैजुअलिटी लिस्ट हो जाती है, चीजें हो जाती है. वाटर स्कार्स हो गए हैं जी हम, अभी अगले साल या इस साल के एंड तक शायद वो डिक्लेयर भी हो जाए. अभी स्कार्स ऑलरेडी हो चुके हैं. और फ्लड्स की अगर हम तादाद देखें तो 88% तो हमारी जो हैजर्ड है उनमें फ्लड्स हैं. और पिछले 15 साल में अगर देखें तो सिर्फ सैलाब ही आया सबसे ज्यादा. येट हम तैयार नहीं है कि हमको डैम बना लें, वेटलैंड बना लें, वाटर स्टोरेज की बात कर लें, वाटर कंजर्वेशन की बात कर लें. नहीं, हम नहीं कर सकते. इतने पानी के बावजूद हम ब्राउन पैचेस मुल्क में ज्यादा है, ग्रीन नहीं. और पानी हमने इस्तेमाल करना है. रेन वाटर हार्वेस्टिंग की हमने बात नहीं करनी. जो सिर्फ बारिश हो रही है उसको हमने नहीं करना. ये तमाम चीजें सिक्योरिटी में है. वाटर इज द बिगेस्ट नेशनल सिक्योरिटी इशू. द नेक्स्ट वॉर्स will be fought against water. With the sea level rising because of the growing temperature, 1.5 to 2 degree की हम बात कर रहे हैं. Science tells us कि there will be regions जहाँ पे 4.88 Celsius बढ़ चुका होगा, which will practically be unlivable. We will have those regions. We will have those hotspots in the country, which will unfortunately, Allah maaf kare, will become unlivable. That's a security threat. Where will those people go? And if I connect that to the conversation which was taking place prior to this session, the growing population at an uncontrollable rate, you will not have space to accommodate people. And then when you start losing the places
which are unlivable, either because of high temperatures or because of sea level rising. वो लोग कहाँ जाएंगे? ये बड़े सवाल हैं हमारे लिए जिनको हमने एड्रेस करना है. इन सारों को देखें तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे तो ऑलरेडी हम स्पेंड नहीं कर पा रहे इस वक्त भी, अगर आप देखें. और इंफ्रास्ट्रक्चर की तो अगर एक छोटी सी मिसाल ले ली जाए सैलाब के साथ ही कनेक्ट करके, कि अगर एक रिवर बेड में एक होटल गिरता है जो मशहूर इस दफा की डिस्कशन पॉइंट में आया है, तो वो तीसरी बार होटल वहीं पे बन रहा है. समझने की ये बात है कि क्या उस शख्स को नहीं पता कि यहां से पहली बार सैलाब में मेरा होटल गिरा या दूसरी बार गिरा, और अब तीसरी बार भी जो मैंने बनाया है वो क्या उसका बनेगा? या वो सिस्टम को चैलेंज कर रहा है कि सिस्टम उसको नहीं रोक पा रहा, मेरी समझ से बाहर है. दैट इज द इंफ्रास्ट्रक्चर वी हैव. जब आप किसी गांव की बात करते हैं, कहीं पे बात करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर आपका जो बिल्टअप है वो उस लिहाज से रेजिस्टेंट नहीं है, ना तो फ्लड रेजिस्टेंट है, ना अर्थक्वेक रेजिस्टेंट है. उस पर आपके पास पैसे इतने नहीं है कि आप उसको उस डेवलप्ड फॉर्म में लेके आ जाएं जो कि सस्टेन कर सके ये तमाम चीजें. और ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर किधर है? आपके अर्बन और रूरल का मिक्स जो है वो मजीद खराब होता जा रहा है. लोग माइग्रेट कर रहे हैं, शिफ्ट कर रहे हैं. दैट्स अ सिक्योरिटी, दैट्स अ नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस अगेन. जब आपकी चीजें चौक होना शुरू हो जाती हैं, आपकी डेवलपमेंट नहीं हो रही होती, आप मुल्क में जगह उठा के देख लें इस वक्त के कितने परसेंट आपकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर है. जो नॉन रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर है दैट्स अ फैक्ट. आज कल परसों खुदा ना खास्ता किसी वक्त कोई भी हैजर्ड आता है, ह्यूमन या क्लाइमेट, we will have to bear that cost. I'll stop right here. I mean, the question is, how do we actually go about it? Do we have any alternate financing mechanisms? Because NDRMF has been discussing this a lot. So, are there any alternate financing mechanisms that we can further explore, or how do we address that financing challenge that currently exists? Is there any way out as well? Yeah. And if you would also like to touch upon any of the interventions that other speakers have highlighted or respond to those as well. Thank you. Thank you. I think इसमें जो ज़रूरी है या my humble suggestion would be, let's add the word judicious use of financial resources. We already have limited resources, limited finances available, and we're not using them judiciously. So that's one very important thing. जिस तरह मैंने पहले भी अर्ज की कि जो spread है वो already increase कर रहा है. So the financial need is increasing every single day. With every new hazard coming in, the financial need is increasing. और जो एग्जिस्टिंग है अगर हम उसको नहीं कर पाएंगे तो फिर वो स्प्रेड मजीद इंक्रीज करता है. दूसरी चीज, इंपॉर्टेंट पार्ट इज NDRMF is an institution made by the government to ring fence the money for resilience building. I think we got to stick to whatever we develop an institution for. If the government, if the policy, if the law has made an institution or any specific vehicle for that matter, let's stick to its role indifferent of the fact कि बाहर circumstances कैसे change हो रहे हैं. क्योंकि when we keep on changing the goal posts, तो पैनिक की सूरत में, urgency की सूरत में, emergency की सूरत में, तो वो मजीद खराब हो जाता है. So my only submission here is कि एक तो financial resources को we got to look around us. Even if it takes a longer time to secure finances, let's just do that. Let's start doing that in parallel. We probably come to the point where we only want low-hanging fruits, and we can't actually wait for finances which take a year and a half or 2 years, but come in a grants form, but we want something which is quick, maybe that's a loan. So we got to address this issue in a more stable mindset mode, that all right, let's access all these financial modalities in parallel. Let's access all blended finance, and then whatever we receive, let's prioritize that and judiciously spend. I'll stop it. The population in Pakistan, they're tackling with 3 vulnerabilities like climatic, economic, and political. So the existing policies, for instance, if I'm talking about the infrastructure like buildings, we are building energy efficient buildings and green sustainable buildings. But we are not talking about the resilient buildings, which actually is the need of the time. So I believe, and that's my recommendation as well for the panelists, if they can shed light on that. That we need to build a policy, especially for the like we have energy efficient building codes, we have sustainable building policies as well. But we don't have resilient buildings policy. So who should take lead on that?
and how we can educate the people, especially if they want to rebuild or retrofit their own buildings. So this is the gap. Fawad sir, if you want to respond to anything, and then Khalid from the second point. थैंक यू जी. आई थिंक एडेप्टेशन और मिटिगेशन का मिक्स जो है वो बहुत ज़रूरी है, और दोनों ही इस वक्त हमारे लिए मजबूरी भी बन रही है. इन टर्म्स ऑफ एमिशंस पे मैं नॉट टू कॉन्ट्रडिक्ट एनीथिंग, लेकिन सिर्फ इतना ज़रूर है कि CO2 की हद तक तो हम ज़रूर हैं, लेकिन अगर उसके पैरेलल हम मीथेन पे देख लें तो वी 7th मोस्ट एमिटर इन द वर्ल्ड, एंड मीथेन इज 21 टाइम्स मोर डेंजरस देन CO2. तो अगर, और सिमिलरली जब कार्बन की भी बात करते हैं तो क्रेडिट वाइज भी वो 21 टाइम्स पहुंच जाती है. तो इन टर्म्स ऑफ एमिशंस वो हम हैं. AQI पे हम वी हैव 3 cities among the top 10 in the world which are worst hit जी. तो शायद हर चीज़ जो है वो उस लिहाज से खराब नहीं किसी और की वजह से हो रही. इन दोनों चीज़ों को जब आप देखते हैं तो अडेप्टेशन मिटिगेशन के मिक्स के बगैर आप नहीं कर पाएंगे. एक से अब शायद हमारे मसाइल हल नहीं होंगे.